નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્કાયનેટ મીડિયામાં આપનું સ્વાગત છે। આઈસીએસના પ્રમુખ સીએસબી નરસિમ્હા દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી અને તેમના દ્વારા માહિતી આપતા જણાવાયું હતું કે અમારા કાર્યક્રમમાં મારી સાથે ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગના અગ્ર સચિવ મુકેશ કુમાર, મહેસાણાના કલેક્ટર એમ નાગરાજન, ગુજરાત સરકારના સંયુક્ત ઉદ્યોગ કમિશનર આર.ડી. બારહટ તેમજ આઈયુજીસીઓ હિરમન્ય મહંતા સહિતના મહાનુભાવોએ સેમિનારને સંબોધિત કર્યા હતા, પોતાના અનુભવો અને વિચારો પ્રસ્તુત કર્યા હતા અને એમએસએમઈ સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમમાં પ્રોફેશનલ, ખાસ કરીને કંપનીની ભૂમિકા પર મહત્વનો પ્રકાશ પાડ્યો હતો। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આઈસીએઆઈ સંસ્થાના પ્રમુખ અને આઈ હબના સીઈઓ હિરમન્ય મહંતા વચ્ચે સીધી વાર્તાલાપ કર્યો અને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે આઈસીએસઆઈ એક મોડ્યુલ તૈયાર કરશે અને કમ્પાઇલ કરે જે ગહન વિશ્લેષણ આપશે અને કોમ્પ્લાયન્સ અને ગવર્નન્સ સ્ટ્રક્ચરની એમએસએમઈ અને સ્ટાર્ટઅપ માટેની વિભાવનાઓ ઓળખાશે। Narasimhan, I am the president of the Institute of Company Secretaries of India, which has its head office in the city of Delhi. Today I came here to attend one program, capacity building program on MSME and startup, which was done with in the High Hub. आपको innovation high hub का मालूम है, that is there in the Gujarat University. उनके साथ हमारी program किया था, and we had more than 200 professionals who attended this program. This was basically focused on what the company secretary can do for MSME startups and MSME and startup. As far as our program is concerned, we have about 73,000 students and over 2 lakh students and 70,000 odd members. And we find there is going to be a dearth of professionals in the years to come. हमारी जो है, in fact, in my conversation with the regulators, I've been told that we need to have larger number of members coming our way because there is going to be capital market का ही concentrate करते हैं, तो जिसमें आपका नंबर currently अभी 73,000 है। by 10 trillion जो इकोनॉमी बनने के लिए कोशिश करते हैं गवर्नमेंट, that is by 2030, the number of members which will be required for servicing this economy would be in the range of about 95 to 1 lakh. And most importantly, विकसित भारत की बात करते हैं 2047 में, the number of members who required for servicing the industry at that point in time will be in the range of 1,45,000 to 1,50,000 members. So this is the requirement. इसके लिए हम लोग कितना पूरा कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लेके आने के लिए। एंड हमारी अब आज का दिन ये बता सकता हूँ, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी नौकरी के बिना नहीं रहता। एवरीबडी गेट्स अ जॉब, इमीडिएटली दे गेट क्वालिफाइड, एंड द एवरेज पे स्केल इज ऑल्सो गॉन अप वेरी हाई। इट इज इन द रेंज ऑफ 6 to 7 lakhs मिनिमम लेवल में, ऑल्दो सर्टेन स्टूडेंट्स गेट मोर देन 12 to 15 lakhs ऑल्सो। तो यही करंटली हमारी है। सो आई रिक्वेस्ट दैट ये जो हाईलाइट करने के लिए when you want to highlight that the importance of the role of company secretary in the country, in the economy, वो तो आपको हाईलाइट करना चाहिए। एंड बिकॉज वी आर द गवर्नेंस प्रोफेशनल, वी आर द प्रोफेशनल हु आर क्लोजली वर्किंग विद द बोर्ड ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, एंड वी आर 1 level बिलो द बोर्ड। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच विल बी परफॉर्म। एंड जो इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ओनली सोर्स ऑफ मेजर डेवलपमेंट होने के लिए गुंजाइश है इज ओनली द कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट के बारे में बात करेंगे, द ओनली वन प्रोफेशनल व्हिच विल कम टू इन फ्रंट ऑफ यू इज दैट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। आई वांट ईच वन ऑफ यू टू हाईलाइट दिस एस्पेक्ट फॉर द पब्लिक टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल अ कंपनी सेक्रेटरी प्लेस इन द इकोनॉमी एंड इन अ कंपनी। थैंक यू वेरी मच। अहमदाबाद में आने वाले दिनों में आप भवन का निर्माण करने वाले, वो खबर क्या है? हमारी जो है, हमारा अहमदाबाद की जो करंटली जो ऑफिस है, दिस वाज मोर देन 25-30 years हो गया, तो ये बिल्डिंग भी थोड़ा डिलिपेटेड कंडीशन में है। तो हम लोग एक नया ग्राउंड आइडेंटिफाई कर दिया, औडा के साथ बात कर लिया, तो वो बोले थे अभी इलेक्शन के कारण से वी आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन। पर इलेक्शन होने के बाद आके मिलने के लिए कहा है। वो अबाउट 2500 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है, जिसमें हमारा एक अहमदाबाद चैप्टर के लिए बहुत ही बड़ा ऑफिस बन जाएगा, जिसमें हम लोग अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर एक्टिविटीज व्हिच वी डू, वी विल आल्सो हैव एन ADR सेंटर once it is established. That's all. Thank you. Thank you. સ્કાયનેટ મીડિયા